हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी हदीका शोज़िब। आज मैं करूँगी एवरीडे मेकअप लुक विच इज़ सुपर इजी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सेलोन की कोकोनट फेस क्रीम, जिसको मैं अपने फेस पे हल्का हल्का डैब करूँगी। फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग टार्ट शेप टेप कंसीलर, जिससे मैं अपने डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स और रेडनेस को कवर करूंगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इट कॉस्मेटिक्स की सीसी क्रीम, क्योंकि ये एवरीडे मेकअप लुक है और मैं रोज़ाना फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, बट यू कैन इफ़ यू वांट टू। सीसी क्रीम को फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं उसको ब्रश से ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ M.A.C स्टूडियो फिक्स पाउडर टू सेट माई फेस। फॉर ब्राउज आई एम यूजिंग अर्बन डीके का दी ब्राउ बॉक्स। उसके लाइटर शेड से मैं अपनी ब्राउज को डिफाइन करूंगी। और डार्कर शेड से मैं अपनी ब्राउज के गैप्स फिल करूंगी। फॉर आई शेडो आई एम यूजिंग दिस पिंक शेड एज माई बेस कलर, जिसको मैं अपनी पूरी लिड पे अप्लाई करूंगी। नाउ आई एम यूजिंग दिस लाइट ब्राउन शेड, जिसको मैं अपनी अपर लैश लाइन पे लगा के वहीं पे उसको ब्रश से ब्लेंड करूंगी। और वही सेम शेड मैं एक फ्लैट ब्रश से अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। नाउ आई एम यूजिंग दिस LANCOME khôl पेंसिल, जिसको मैं अपनी अपर लैश लाइन पे लगाऊंगी और एक फ्लैट एंगल्ड ब्रश से उसको स्मच करूंगी। लैशेस कर्ल करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का दे आर रियल मस्कारा। जब फर्स्ट कोट ड्राई हो जाए तो मैं एक और कोट लगाऊंगी।
फॉर ब्लश आई एम यूजिंग गर्लैक्टिक चीकी टिंट एंड ग्लो पैलेट। क्योंकि ये क्रीम बेस्ड फॉर्मूला है तो मैं उसको अपनी फिंगर से लगा के और ब्रश से ब्लेंड करूँगी। इसी पैलेट के हाइलाइटर को मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी। चीक्स, नोज, क्यूपिड्स बाउ एंड फोरहेड। फॉर लिप्स आई एम यूजिंग दिस डियर डार्लिंग लिप टिंट, जिसको मैं सिर्फ अपने लिप्स के सेंटर में लगाऊंगी। नाउ आई एम यूजिंग दिस कलर पॉप की लाइट पिंक लिपस्टिक, जिससे मैं अपने लिप्स का शेप डिफाइन करूंगी। एंड वी आर डन। अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। See you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.